This is a simple matrix application based question where the price of three commodities are given to you, that is 10, 12 and 20. Along with this, the second part of the question is saying that customer A buys 10 units of X, 8 units of Y and 4 units of Z. Similarly, customer B buys 9 units of X, 6 units of Y and 5 units of Z. So now we need to show this information in the form of matrix. And then you need to compute the amount that is spent by each of the two customers. अब देखो क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि ए और बी ने कितनी कितनी अमाउंट स्पेंड करी टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ एक्स वाई जेड. सो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा मैट्रिक्स 1, दैट विल बी योर 10, 8, 4 and 9, 6, 5. जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है वो तुम किस पे रखोगे, रो में रखोगे. कैसा करना है आपने ये, यू नीडेड टू फाइंड आउट द अमाउंट स्पेंड बाय ईच ऑफ द टू कस्टमर. तो ए और बी ने कितना कितना अमाउंट स्पेंड करा वो चीज आपको निकालनी थी. तो उस चीज को हमने क्या रखा है, एज अ रो रखा है. एंड देन कॉलम्स में हमारी है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. नाउ वी विल बी मेकिंग द सेकेंड मैट्रिक्स. अब देखो जो चीज फर्स्ट मैट्रिक्स में तुम्हारे कॉलम्स में है वो चीज तुम्हारे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रो में होनी चाहिए. तो फर्स्ट मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम. सेकंड मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड is represented in the form of rows. And for matrix multiplication there is a very important rule that says number of column of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. सो देखो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इस ये कौन से साइज का है, इट इज ऑफ द साइज 2 into 3. वाई? बिकॉज इट हैज 2 rows and it has 3 columns. And similarly our second matrix is of the form 3 into 1. So as you can see here that the number of columns in my first matrix is matching the number of rows in my second matrix. So I can say yes, the multiplication of both these matrices is possible. So there are two things that you need to remember while doing the matrix multiplication. पहला तो ये कि जो भी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है वो आपकी रो की फॉर्म में होनी चाहिए. दूसरा ये कि जो चीज़ फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर कॉलम में है वही सेम चीज़ जो सेकंड मैट्रिक्स में है वो रोज में होनी चाहिए. और तीसरा ये कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड मैच द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. ठीक है. अगर ये एक्स वाई जेड फर्स्ट मैट्रिक्स में भी कॉलम्स रिप्रेजेंट करे और सेकंड मैट्रिक्स में भी, सपोज अगर तुम ऐसे लिख देते 10, 12, 20, so this would have become 1/3 matrix, so the multiplication could not have been possible. So what I have seen in your test papers is that most of the students have made the matrix correct but they had done the multiplication wrong. उन्होंने ये जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है 10, 12, 20 वाला ये आगे लिख दिया है और ये दूसरा पीछे लिख दिया. मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा. So I hope this point is clear to everyone. I am repeating again. Number of columns of the first matrix should match the number of columns of the second matrix for the multiplication to happen. Now जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 2 into 1 का. 2 into 1 का मतलब है 2 रोज होंगी उसके अंदर और एक होगा उसके अंदर कॉलम. ठीक है. तो दिस 3 and 3 gets cancelled, so what is left is 2 into 1.
So the first number represents the number of rows and the second digit represents the number of columns. 2 rows and 1 column. So it will be A11 and A21. अब तुम कहोगे मैम इसका मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. So this row will get multiplied by this column. So you will be getting 10 into 10 plus 8 into 12 plus 4 into 20. And similarly the second one means second row and first column of the second matrix. So now you just do the multiplications and you will get your answers to the questions. Hundred plus 96 plus 80. So you will get here 276 as the amount spent by A on purchasing the commodities X, Y and Z. And in the second one it will be 90 plus 72 plus 100. So it will be 262 as the amount spent by B on purchasing the commodity X, Y and Z, and this will become your final answer. If you have any queries now, you can ask me. Thank you.